Hello, hi. Hi, Hello, hi. How are you? I'm good. How are you? I'm great. गणपतीचं celebration चालू आहे घरी, so I'll just lock the door and come here. Uh, First of all, thank you so much for allowing us to take your interview, and we have been loving your content all throughout the COVID pandemic. आणि खरं सांगू तर मी आधी पण तुम्हाला बोललेले की ड्युरिंग दिस टफ टाइम फाइंडिंग लाफ्टर अँड जॉय वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. आणि Yeah, तुमच्या कॉन्टेंटनी, तुमच्या अख्ख्या ग्रुपच्या कॉन्टेंटनी ते आम्हाला बघायला मिळालं. दॅट्स वाय आय एम रिअली रिअली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गायज, अँड वी आर रिअली इन्स्पायर्ड बाय यू. आणि इट्स नॉट इझी, ऑनेस्टली इट इज नॉट इझी टू क्रिएट सच कॉन्टेंट. तुम्हाला काही सगळ्यांना बोलायचं असेल तर यू कॅन स्टार्ट ऑफ. विल वेलकम एव्हरीवन. yeah. पहिली गोष्ट सर्वांना जे आता बघतायत, हॅलो गाईज, हाय. मला माहिती आहे मी खूप दिवसांनी लाईव्ह आलो. आय गेस आफ्टर 3 or 4 months आय हॅव कम लाईव्ह. तो थँक्यू जे पण मला कमेंट करतायत, करण भाई, पांडू, आशना, थैंक यू सो मच. साथ बनता है लोग, कैसे है भाई? सब लोग का कमेंट्स मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यार. यू हैव बीन गिविंग अस एवरीवन for the content, sharing our content, and we are just working hard, to entertain you every day. म्हणजे आता पण आमचं ऍक्च्युली शूट चालू होतं, ते संपून आता मी इकडे आलोय आणि बाहेर शूट चालू आहे, बाकीचे लोक करतायत. सो एव्हरीथिंग इज गोइंग ऑन फॉर यू पीपल ओनली. व्लॉग्स वगैरे मी टाकत नाहीये, त्याचं पण मी उत्तर देतो की खूप कामात मी बिझी आहे, बट डेफिनेटली एव्हरीथिंग विल कम. तुम्हाला दिसते आता नवीन घर वगैरे, एव्हरीथिंग इज सेटअप, बट खूप गोष्टी आहेत डोक्यात. नीड टू एक्झिक्यूट इट, बट सून एव्हरीथिंग विल बी आउट. अँड to you, Devyani, I'm extremely sorry that I didn't reply to you on WhatsApp, on call. We were about to नाही. do this live on 5th of September, but because again I got lost in my work and sagli dhawpal and I couldn't do it. But now we are here, and I think it will be great. येस, वी ऑल आर एक्सायटेड फॉर दिस वन. आणि काही नाही, लाईक फॉर मी तुम्हाला सांगितलं पण की टेकिंग दिस सेशन इज मोर इम्पॉर्टंट. तो कधी घ्यायचा असं काय हे नव्हतं, टाइम नव्हता. तर मला विचारायचं आहे की जे कॉन्टेंट स्पेसमध्ये आता तुम्ही आहात, वॉज इट अ व्हेरी प्रॅक्टिकल चॉईस का इट वॉज युअर इंट्युशन? कसं होतंय? So should I बिकॉज इट्स answer नॉट in इझी, like कारण दिस इज mix? अ व्हेरी ह्यूज, म्हणजे खूप ह्यूज रिस्क आहे टू कम्प्लिटली इन्व्हॉल्व युअर सेल्फ इन द बिगिनिंग इन टू कॉन्टेंट क्रिएशन. तर वॉज इट युअर प्रॅक्टिकल Okay. चॉईस का तुम्ही लाईक यू वेंट विथ द फ्लो? So should I answer in Hindi Marathi mix chalega, so that everyone हो हो, gets to know? नक्की. हो हो हो. तो ऐसा चॉइस ऐसा नहीं था, बट द थिंग इज कि यही आता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है. लाइक आई कैन फाइंड कंटेंट इन एनीथिंग, एंड लाइक टॉकिंग टू यू ऑल्सो आई माइट फाइंड कंटेंट. तर कैसे भी हो सकता है, किधर से भी हो सकता है, और इसके अलावा मैं और कुछ कर ही नहीं सकता. मुझे कंटेंट बनाना, एक्टिंग करना, जब भी मैं एक्सपोर्ट मारता हूँ मेरा फाइल, जो देख के मुझे मजा आता है कि ओ दिस इज द आउटपुट विच आई हैड इन माइंड, एंड वही मेरे सामने आया है. So I love that thing. I think it is, part of the flow. It went with the flow. Like I've been doing this from the past 6 years now, and आता ती सवय लागली है. So आदत लगने से अभी समझ गया है कि how to make content. मतलब if you see my first content, तो है funny है, but presentation अच्छा नहीं है or something. There is some problem. So with experience, with doing it again and again, then I got to know कि okay, ऐसा हो सकता है. एंड नाउ आई एम, मतलब आई टेक माई कॉन्टेंट टू नेक्स्ट लेवल, सो दैट पीपल विल बी लाइक अभी ये और आगे क्या सोच सकता है, सो दैट आई कैन गिव पीपल न्यू. दैट्स व्हाट आई लव. करेक्ट. कि और क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और कुछ नया चीज क्या लग सकता है. सो इट इज विद द फ्लो, बट ऑल्सो विद पैशन एंड विद डेडिकेशन, दैट आई हैव टू डू दिस, एंड इसमें ही मेरा मन है. सो दैट्स व्हाट आई डू. So in the initial, years when you started off, Yeah. was there any procrastination in you, Genuinely. or because there might be some reaction, family reaction, which might be coming in? I've seen your father enacting certain fabulous roles in your reels. So was there Yeah. any procrastination that whether it's going to go ahead or not, or anything as such? Because right now, due to COVID, everyone is facing that. So I want to know from your perspective that how did you thrive for so long? uh, So, like every Marathi household, my household is also the same.
की हे काय करतोय, असं काय चालू आहे, पैसे नाही, व्हॉट आर यू डुईंग, आणि हे सगळं चालू होतं. अँड दे मतलब आय एम अ ड्रॉप आउट फ्रॉम होटल मॅनेजमेंट अँड देन theaters, and then I did stand-up comedy, and then I was like, I'll do YouTube. So there were too many jumps from here and there. But one thing I got to know, कि I can adapt to anything. You know, if I can do theaters, then I can switch to stand-up, then I can switch to YouTube, then I can adapt to anything. So that was the thing. Like when I went to Bhadipa also, I started memes over there, which I had never done in my life. सो तिकडे पण मी अडॅप्ट झालो. सो मला कळून आलं की ओके, आय हॅव दॅट अडॅप्टिव्ह स्किल. अँड घरातून तसा जेन्युअनली सपोर्ट नव्हता सुरुवातीला. त्यांचं असं होतं की तुला दुसरं काही येत नाही, ऑलरेडी फेल झालायस, जस्ट डू इट, जस्ट डू व्हॉट यू वॉन्ट. 2-3 साल किया यूट्यूब, कुछ नहीं आया. Then I switched to Bhadipa. वहां से बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला. And then in lockdown, I got to know about my content, and then people loved it, and then I got the whatever the followers or the people I had. So मग घरच्यांना पण ओके, जरा कोई तो अच्छे लाइन में गया है भाई, हा हो रहा है. बट स्टिल टुडे ऑल्सो स्टेट बँकची आली ना, की ऍड आली ना, की स्टेट बँकचे वेकन्सी आलेत, जरा भरतोस का, बघ जरा, म्हणजे सो दॅट इज द सिच्युएशन. बट इट्स कूल राईट नाउ. सुरुवातीला इट वॉज नॉट, बट नाउ. So my next question is, can you describe one most challenging moment in your life, that is, or then one most happy moment in your life which has made you cry? Anything. Made me cry. तुम्हाला recollect होतं? Made me cry. To be very honest, the followers thing or the people loving my content, or that didn't give me that high. But meeting Divine was a very emotional moment for me. Like people who follow me know that I'm a huge Divine fan, and I was not expecting to meet me. Like he's such a huge person, and वो मिले और बात किया, and everything, like he still messages me, talks about my content, and he guides me through many stuff. So when I met him for the first time, yeah, I cried. And yeah, that was. And abhi second time actually जो हुआ है, which is about to come. For my audience, I would like to tell you there is something special coming in IPL with a special person. I hope you know that person. And तभी वे देख के I cried. So those are some moments that make me cry. And लोगों का प्यार जो है ना, that is, मतलब मेरा personally ऐसा है, for every creator this is like, लोगों का प्यार मिलता है, people follow you, people comment, people love you so much, but don't take it for granted. I never take that for granted, because वो लोग ने विश्वास रखा है. Like people come to us and they tell us that bro, तेरे वजह से we smile, बुरा टाइम था, smile. We have no clue ये कैसे होता है, but still they say, and that is a very big responsibility for us. And उसको हम लोग कभी लाइट नहीं लेते, और किसी ने भी नहीं लेना चाहिए, I feel. Correct. So that is like, that is a great moment for us when people come to us and they say कि bro हंसाया, bro watch your reels so many times. Whenever we put out anything, brand हो, normal video हो, कुछ भी हो, they give us so much of love ना, कि भाई मतलब मन एकदम भरून जातं. असं प्रेम या लोकांना भेटू शकतं की ते लोकांशी ऑनेस्ट आहेत आणि स्वतः कामाशी ऑनेस्ट. सो यू शुड बी इन दॅट वे. आणि एक गोष्ट मी नोटीस केली आहे, कन्सिडरिंग यू किंवा जॅकी सर आहेत किंवा मनोज सर आहेत किंवा ऑल दीज दे ऑल्सो एव्हरीवन क्रिएट्स कॉन्टेंट इन देअर ओन मॅनर, पण तुम्ही सगळे एवढे हंबल आहे. यू डू नॉट सी की अरे ह्यांचं फॉलोइंग केवढं आहे किंवा ह्यांना अप्रोच केलं पाहिजे का किंवा ह्यांचं ऍक्सेप्ट केलं पाहिजे का. जॅकी सर अजून पण ही इज कनेक्टेड टू मी, असं काही रिझन नाहीये. बट जे तुम्ही हंबलनेस दाखवता ना, लाईक दॅट इज समथिंग विच इज रिअली इन्स्पायरिंग आणि खूप चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे this approachability of let's say a fan or a person who wants to kind of interact with you for gaining that positivity, आणि तुम्ही तसं त्या पद्धतीने विथ रिस्पेक्ट जे रिप्लाय करता किंवा रिस्पॉन्ड करता ना, ही तुमची खूप चांगली क्वालिटी आहे, विच आय हॅव नोटिस्ड इन ऑल द यंग कॉन्टेंट क्रिएटर्स विच आर कमिंग इन. आणि यू आर नोन फॉर क्रिएटिंग कोलॅबरेटिव्ह कॉन्टेंट. म्हणजे तुमचा अख्खा ग्रुप आहे आणि
तुमचं पर्स्पेक्टिव्ह काय? व्हॉट इज युअर पर्स्पेक्टिव्ह अबाउट कोलॅबरेशन ओव्हर कॉम्पिटिशन? म्हणजे नेहमी आय हॅव सीन दॅट यू आर मोर कोलॅबरेटिव्ह दॅन बिंग कॉम्पिटिटिव्ह. यू आर व्हेरी हंबल अँड अप्रोचेबल इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ दिस. तर त्याचा काय अप्रोच आहे? Regarding humbles, just like to say की I have no clue की fame कसा डोक्यात घुसतो. Genuinely, because I think I am with the people right now, like with my gang. I am with them. आणि आम्ही असे म्हणजे अजून छोट्या चिंदी गोष्टी करतो. म्हणजे लोकांना हे पण माहिती आहे. आय थिंक दॅट इज द रिझन पीपल आर कनेक्टेड टू अस. दॅट इज येस ठीक आहे. वी अर्न्ड मनी, वी गॉट एव्हरीथिंग, सगळं आहे. बट वी आर स्टिल दॅट ओनली. मतलब रस्त्यावर जाताना पण पीपल विल फाइंड मी, अरे ये तो नॉर्मल लग रहा है, ये तो अच्छा ही लग रहा है, ये कुछ बड़ा वाला. So that is, I don't know how that hits you. I hope that doesn't hit any creator at all. And regarding म्हणजे sorry, I forgot what is the first question. दुसरा क्वेश्चन असा होता की कोलॅबरेशन मध्ये तुम्ही विश्वास ठेवताय. यू आर मोर कोलॅबरेटिव्ह दॅन कॉम्पिटेटिव्ह. असं कोणामध्ये दिसलं नाही की तुम्ही कॉम्पिटिशन करताय. यू हॅव ऑलवेज बीन व्हेरी इन्क्लुसिव्ह इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट. तर हाऊ डू यू गेट दॅट इन्स्पिरेशन? So regarding collaborations, माझं असं कॉम्पिटिटिव्हनेस असं आहे ना. पर्सनली आय हॅव गॉट टू नो अबाउट इट वे लॉंग बॅक. आणि I have applied that and that has worked for me. Okay. When I was, this is just an example. When I was at 1 lakh followers, okay, I was doing some other shoots, movies चालू होते त्यावेळी, and I couldn't post content. So because of that, my followers had stopped, my engagement had stopped, everything was stopped. And people used to tell me ki bro, people are going ahead and what are you doing to content क्यों नहीं post कर रहा वगैरह, वो सब चालू था. I was like, okay, I'll do it, wait. And then I posted a content which just got me 2 lakh followers immediately, just one video. So that was my example कि you don't have to be competitive, because किसी का भी टाइम कभी भी पलट सकता है. You just have to be honest with your work and your videos or whatever you are doing right now. मतलब ये तो videos हमारे लिए हो गया, but in your work, if you are, it will definitely give you the proper returns. So competitiveness मी हे काढूनच टाकलेलं. I just needed a point to prove, and that got proved की one video just got me 2 lakh followers. And after that, because my game was not competitiveness, my game was putting out quality content. And later I knew ki if I put quality content, I'll get followers, whatever it is. But if I be competitive ki no bro, I need to, मतलब दिसंबर तक 1 million होना है या इसके आगे जाना है, तो you won't focus on your work. You will focus ki इसके आगे. And that is one reason I stay away from. And I don't want to get into that trap की competitiveness रखना है. Collaborations मी definitely करतो, खूप लोकांबरोबर करतो. But collaborations करताना माझा एकच विचार असतो, that collaboration should be justified to that creator also and to me also and to my audience also. तो मतलब अभी मेरे को कल शाहरुख खान मिला और वो बोलेगा कि ब्रो कुछ करते हैं ना, पर मेरे दिमाग में आइडिया ही नहीं, तो आई कैन फोर्स माई सेल्फ टू डू इट. मेरे दिमाग में मैं सोचूंगा, मेरे को एक कंफर्म आइडिया मिला ना, मैं उधर के उधर करूंगा. बट अगर नहीं आया आइडिया, आई विल डू इट लेटर. कोई है नहीं. So you don't have to force yourself to do the collaboration. The collaboration should be great for the creator, for yourself, and for the audience, so that people will be like, भाई ये जो था ना, ये मजा आ गया. For their audience also, for the other creator, they are also like, क्योंकि their audience is also seeing a new face. My audience is also seeing a new face, so they would love वो creator ने मजा दिया या मैंने मजा दिया उसके. So that is my rule कि भाई collaborations करना है, but ठीक तरीके से करना है. और competitiveness तो ये तो दिमाग से उड़ा ही दिया है. Correct. And that is very important. कारण मी प्रत्येक content, not only you, but तुमचं collaboration I've seen with a lot of other content creators. Everyone has an equal role to play in those content. आणि खूप original content असतं. तर you are known for creating very original content based on the trending reels. म्हणजे आता कुठली रील ट्रेंड होत असेल त्याच्यावर युअर खासियत इज दॅट यू क्रिएट अन ओरिजिनल कॉन्टेंट ऑफ युअर्स. असं रिपिटेटिव्ह काय नसतं. So how do you come up with these ideas? So over here, my rule is that whenever a trending thing or I have an idea,
I think the first thought which comes in my mind, I just delete that, because the first thought comes to thousands of, like, lakhs of people. Correct. To the second thought कि अजून इस पे और कुछ क्या हो सकता है, because many people are making content, and me as a good content creator, if I do the same thing and it clashes with someone else, माझी मेहनत waste, आणि मग then that creator will be like, "Hey bro, तूने copy किया," and all that stuff happens. Absolutely. So Correct. people, like our audience, also knows us that we put out only original content, Correct. and we don't want to mess up with the first thought, because many people do that. Of course, if you got it instantly, and if you can put it right, then it is completely fine. But if you're taking time, then you have to wait. You don't have to rush behind it. ट्रेंड आलाय म्हणून ट्रेंडवर पटकन करायचं असं काही नाहीये. तुफान करू शकतो, बट तो थॉट जबरदस्त पाहिजे, अँड दॅट विल हिट द ऑडियन्स राईटली. सो सेकंड थॉट जो येतो तो आम्ही विचार करतो. देन द थर्ड थॉट वी गो टू, वी थिंक ऑफ अ थर्ड थॉट ऑल्सो, की ठीक आहे सेकंड थॉट आलाय, बट इफ वी कॅन ऍड द थर्ड थॉट इन द सेकंड थॉट, and that will make the video go boom. Correct. For example, I will give you an example. Many people have seen my Ronaldo ka video, the Ronaldo bottle pass. That was best, huh? That was epic. Yeah. So रात को मेरे को, मैं सोच रहा था कुछ तो बनाना है, ट्रेंडिंग हो रहा है, कुछ तो बनाना है. 5-6 दिन हो गया था उसको. सुबह उठा, सुबह मेरे दिमाग में आइडिया है, मैं बोला ये करने का है, कंफर्म हो गया मेरा. नील केम एंड नील टोल्ड मी, ब्रो ये ऑलरेडी हो गया. तो मैं, ओ डैम, ये तो हो गया, अभी ये क्या करने का. तो फिर देन आई वाज थिंकिंग कि अभी क्या कर सकते हैं. देन आई एडेड माय थर्ड थॉट टू दैट वीडियो, व्हिच मेड इट डिफरेंट फ्रॉम दैट क्रिएटर्स वीडियो. एंड उस क्रिएटर से मेरे को ज्यादा रिस्पॉन्स आया. लाइक विकी कौशल शेयर्ड माय वीडियो. सो मला ते खूप आवडतं when like movies, when you see movies and there is an unexpected ending, then you like, oh भाई ये तो जीत लिया, इसने जीत लिया. So that's what we do in our reels also, कि people expect कर रहा है ना, वो expectation देने का, end में एक अपना पत्ता छोड़ने का. People will, फिर people are forced to share that video, to like that video, comment on that video. So that's the reason I think we have grown. People love us for that thing only personally. मतलब ये indirect thoughts है, but लोगों के दिल में we go because of all these things. There are many factors. If you already, there are a lot of creators right now who are working very hard, but you have to stand out from them, and then you have to stand out, then you have to think like that. Correct. So this is my process. But this is very informative. I would like to ask you, what do you expect from the Indian content ecosystem in the future? तुम्हाला content evolve होताना कसं दिसतंय over the coming years? Currently, because content economy is something which is now taken very seriously. आधी त्याला एवढा exposure नव्हता, but because of all of you who are excelling in their work, त्यामुळे content economy grow व्हायला लागली. तर तुम्हाला future काय वाटतं याच्यामध्ये? Currently and for the future also, I think there is a lot of scope in content creation for all the people. Like people who get inspired by us also, they say ki we started because of you. Correct. You have to be consistent. You have to give quality to the audience. You cannot take people for granted. And Karan, if you want to connect with the audience for future also, you have to make content for your people. You have to make content according to yourself only. But मी हेच बोलतोय की तुम्ही लोकांपर्यंत म्हणजे लोकांपर्यंत ते पोचू दे की तुम्हाला काय नक्की म्हणायचं आहे. करायला म्हणून करू. That's what I'm saying. Exactly. So if you want to be in the current game, if you want to stay in the future also, there is a lot of scope. Lot of people are approaching us right now only. एकच गोष्ट आहे, तुम्ही ही पण समजून घ्या की मला पर्सनली माझा असा पर्स्पेक्टिव्ह आहे की देयर शुडंट बी अ वेव ऑफ युअर सेल्फ. एक्झाम्पल, 3 वर्षानंतर लोक बोलतील अरे वो करण के अच्छा कॉन्टेंट बनातात था. दॅट इज व्हॉट आय हेट फॉर एव्हरीवन, फॉर एव्हरी. सो माझं असं आहे की देयर शुडंट बी अ वेव, देयर शुड बी एन एरा ऑफ युअर की भाई इसने ले लिया है, मतलब ये इसको तोड़ी नहीं है, इसको कोई हाथ ही नहीं लगा. ये मतलब लेट भी डाले वीडियो, बट ये जब भी डालेगा ना तब भी भाई आग लगने वाला है इंटरनेट. सो दैट शुड बी योर थिंग एंड दैट शुड बी नेचुरली. आई गेस यू शुडंट बी लाइक जो डालेगा ना वो आग ही निकलेगा, नहीं.
तेरा हाँ. क्वालिटी कंटेंट तू सोच, वो ऑटोमेटिकली आग होने वाला है. So for the future, I'm telling all the content creators, there is a lot of scope. You just have to stay in the game, be consistent, and put out quality content. That's the game. आणि कसं होतं माहितीये का, यू नाव वी नो युअर कॉन्टेंट, वी नो युअर टेस्ट, म्हणजे वी नो दॅट दिस इज फोकस्ड इंडियन कॉन्टेंट. तर Yeah. तसं हाऊ कॅन वन क्रिएट देअर ओन निश? कारण मी युजली असं बघितलंय की काय काय लोक एक्सेल शीट बनवतात, दे हॅव Uh, दिस होल कॉन्टेंट कॅलेंडर, अँड राईट नाव व्हॉट आय एम लिसनिंग टू इज व्हेरी इम्प्रॉम्प्टू. म्हणजे mhm. सगळं इट्स जस्ट थॉट आउट की आता वाटलं तर लेट्स डू दिस, लेट्स शूट दिस. तर ते प्लॅन कसं करता? लाईक इफ यू हॅव टू डू मल्टिपल लेट्स से ब्रँड एन्डॉर्समेंट किंवा खूप काही गोष्टी असतात, हाऊ डू यू प्लॅन युअर डे? I am very indisciplined right now. Okay, very indisciplined. Uh, full messed up असतो माझा schedule. पण एक असतं की if there is a content to put out on reels, I will do anything. Like I will travel to any place and just shoot it. But apart from that, schedule also karat nahi. There are a lot of brands approaching us. Then accordingly with the brands also, again, जसं मी collaborationचं बोललो with a creator, here for the brands also, personally a normal video ला जेवढी मेहनत मी नाही करत तेवढी मी brand video ला करतो, because the brand video should look very natural. You know, ऍब्सोल्युटली. many people do it like very randomly, and I hate it. But our audience, I think, again loves us for that thing only. Ki we still have that humor thing in the brand reel also, and when the brand tells us कि bro ये script नहीं पसंद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा है आपको, आप इंटीग्रेशन देखो, जो कंटेंट का है हम पे छोड़ो, कंटेंट में सुपर हिट करके ही देगा. And that's the reason many brand are connected with us because of that thing. Just see the integration if it is proper or not, and we trust people and they will just take it to another level. We know that. So that's the thing currently with the brands, and there is no schedule as such. But आता सध्या मग एक रॅन्डम शेड्यूल डोक्यात असतो, या हफ्त्यात हे जाणार आहे, पुढच्या हफ्त्यात हे येणार आहे, पुढच्या हफ्त्यात हे येणार आहे, वॉट एव्हर इट इज. तर त्याप्रमाणे आम्ही ऍडव्हान्स मध्ये गोष्टी प्लॅन करतो. But currently, because we are shooting different projects also, त्याच्यामुळे कधी कधी मिस आउट होतं. But still we try to be like, नहीं भाई ये हिट करना है, ये नहीं छोड़ना. So that's what we are doing currently. And yeah, मतलब there's no such schedule असं genuinely की रोनाल्डो सारखं 7 वाजता उठ आणि 8 वाजता वर्कआउट आणि 9 असं काही नाहीये. वी आर लाईक नॉर्मल पीपल, अँड मला वाटतं ते नॉर्मल असल्यामुळेच आम्ही लोकांना अजून कनेक्ट होतो की हा ऍक्च्युली. एवढा झालाय, बट अजून वागतोय तर आधी सारखाच वागतोय, तसं काहीच नाही. म्हणजे मी इथे रस्त्यावर वगैरे पण फिरतो, लोक येतात भेटतात, मी बोलतो अरे घाबरताय कशाला, या फोटो काढा यार, काय तुमको. सो इट्स व्हेरी चिल अबाउट इट. सो मला असं विचारायचं आहे की वेन यू आर क्रिएटिंग कॉन्टेंट, विच वॉज युअर फर्स्ट ब्रँड एन्डॉर्समेंट, ज्याच्यामुळे लाईक इज देअर एनी स्पेशल मेमरी की एवढे फॉलोअर्स आले किंवा एवढं ट्रॅक्शन आलं, ह्या ब्रँडनी पहिलं अप्रोच केलं, दॅट वॉज व्हेरी मेमोरेबल फॉर यू, असं काही आहे का? दॅट वॉज अ फिलिंग विच यू गॉट की दिस इज द फर्स्ट टाइम आय एम काइंड ऑफ गेटिंग अ ब्रँड एन्डॉर्समेंट, असं काही एक्झाम्पल आहे? पहिली गोष्ट आम्हाला माहिती पण नव्हती की असे पण पैसे कमवले जातात. व्हेरी सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर अस की ओ ब्रँड्स पे, अच्छा असं एवढं केलं की हे भी होतं. अच्छा अच्छा. बिकॉज वी वर कम्प्लिटली न्यू टू दिस अँड वी हॅड नो पर्सन गाइडिंग अस इन दिस थिंग्स प्रिव्हियसली. नो क्लू की कसं, मतलब वी वर द ग्रेट थिंग अबाउट मी इज दॅट I was focused on making content. I was focused on making quality content. I was not running behind money. करेक्ट. त्याच्यामुळे आय थिंक एव्हरीथिंग इज कमिंग बॅक टू मी. की I am still focusing on the quality content, whether it be brands, whether it be normal videos. So त्याच्यामुळे आम्हाला कळायला लागलं, okay, the money is coming to us, and that great things are happening. And I don't, I think my first brand video was a Disney Hotstar video. I was actually partying in Lonavala, and they approached me and they said की शाम को डालना है. आणि मला अजूनही आठवतं त्या दिवशी लॉकडाऊन जस्ट बसलेला, when we were getting back to our house. They told us कि ब्रो आज ही वीडियो डालना है, आज कुछ भी करके डालना है. मैं बोला वो शिट, कैसे करेगा समझ में नहीं आ रहा है. एक शॉट तो मिल गया, दूसरा शॉट आई हैव टू शूट इट आउटडोर्स वेयर आई नीड पर्टिकुलर लोकेशन. सो आई जस्ट कुडंट, किधर ढूंढेगा किधर, पता नहीं. आई वाज ट्रैवलिंग विद माय फ्रेंड्स
and I went to a place. I found out a location, and वो बेचारा गरीब बंदा था, उसका मतलब चाय का टपरी था, वहां पे शूट करना था मुझे. बेचारा चाय वगैरह भी कुछ नहीं था. आई शॉट विथ हिम. सब हो गया, वीडियो अपलोड कर दिया. 4-5 दिन बाद मुझे पैसे आए ब्रांड से, एंड आई वाज लाइक आई विल गो टू दैट पर्सन एंड आई विल गिव हिम $1,000 बिकॉज ही हेल्प मी. कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चाय बनाने का शॉट था, एंड ही मेड चाय एंड आई वाज स्टैंडिंग. आई वाज लाइक ब्रो, नहीं, उसने मेरे को मदद किया यार, उसने मेरे लिए इतना किया, आई विल गो. बट वो लॉकडाउन में चला गया था गाँव, and that couldn't happen. So let's see if he comes back. I'll definitely go back to him. So that was, I think, my first memorable brand endorsement thing, and people also loved it. That is a very kind gesture by you. So creating content every day is a daunting task. So how do you manage with your insecurities, if any? Insecurities आता काय आहे, मला विचार करावा लागतो. Insecurities असं काही नाही. तुला काय वाटतं का? If you can think of any. मला पर्सनली कसं वाटतं की आता युथ दे आर फोकस्ड ऑन आता इकॉनॉमी इज डाऊन, किंवा घरी कमवायचे असतात काही अमाऊंट, किंवा काही पैसे कमवायचे असतात, तर त्याचा प्रेशर वेगळाच असतो. आणि त्या प्रेशर मध्ये यू स्टील हॅव टू क्रिएट कॉन्टेंट विच इज सेलेबल ऑल्सो. फन पार्ट इज डिफरंट, पण सेलेबल कॉन्टेंट पण पाहिजे. जस्ट बिकॉज यू हॅव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ युअर फॅमिली, तर त्यांनी एक इन्सिक्युअर फिलिंग येते की नाही मला हे करायला पाहिजे. तर तसं काही कधी झालंय का? नाही, तसं कधीच नाही झालंय. कारण सुरुवातीपासून माझ्या घरच्यांनी, माय मॉम अँड डॅड टोल्ड की डोंट वरी अबाउट अस, जस्ट वरी अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज हमारा लाइफ सेट है. अभी तेरे को तेरा लाइफ सेट करना है. हमको नहीं पता तू कैसे करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी तूने बहुत खाड़े मारे इसमें. ड्रॉप आउट लिया है, ये लिया है, वो लिया है, मेनी थिंग्स. तो नाउ यू प्लान योर लाइफ. वी वोंट गिव यू मनी, बिकॉज जो फील्ड में तू अभी है वो तेरे को ही कैसे तो वैसी इनसिक्योरिटी कभी हुआ नहीं. बट देयर वाज अ यू वुड से a support from behind, that at least I have a house. I can eat 2 times in a day. I can sleep peacefully. वो था. बट इसके अलावा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पेरेंट्स ने कभी सपोर्ट नहीं किया था वो चीज को, बट इनडायरेक्ट सपोर्ट था पीछे से. जो भी मेहनत किया खुद नहीं किया. एंड इनसिक्योरिटी स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता था कि क्या होगा लाइफ के साथ. इट्स लाइक 25-26, क्या कहाँ जा रहा है लाइफ. मतलब ऑलरेडी सब लोग तो भाई शादी वगैरह करके बच्चे वगैरह निकाल रहे हैं, और इधर अपन तो कुछ भी नहीं हालता, लाइफ में सेटल ही नहीं है. But I think that my tagline, which I use in my vlogs also, that believe in magic, that happened with at the age of 28. Imagine, like met people who are at 22 and they are like, bro, career का वाट लग गया bro, समझ में नहीं आ रहा bro, क्या कर रहे हैं. Correct. Bro, मैं 28 पे successful मतलब इतना भी नहीं, but हुआ है थोड़ा सा. So why are you cribbing about your life? I'm saying hustle is fine. But don't be like depressed or sad की why not anything is happening in my life. काय होतं, आपण दुसऱ्यांना बघतो, जे माझ्यासोबत पण झालं. We see others and then we are like, अरे ऐसे क्यों हो रहा है इसका लाइफ. शादी भी हो गया, पैसे भी कमा रहा है, जॉब भी कर रहा है, एंड मेरे को नहीं पता था 27 तक मैं क्या करूंगा. So I was very scared about it. Yes, I was scared. But और कुछ आता भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता करने को. This was the only thing I could do. And मुझे लगता है कि I think you asked this previously. Just want to add over here कि हम लोग रियल लाइफ में भी ऐसे ही है जैसे वीडियोस में दिखते हैं. To fake it to the audience very या मतलब हम लोग जो चिल्लाते हैं वीडियोस में या मस्ती करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, इससे 5 टाइम बेटर करते हैं इन रियल लाइफ. When we are hanging out with the friends and all stuff. So वही रिफ्लेक्ट होता है इन आवर वीडियोस. बट इफ यू बी अ कंप्लीट पोलर ऑपोजिट, सीरियस पर्सन, और फिर एकदम कॉमेडी करना, वो नहीं, लोग समझ जाते कि वो वैसा नहीं है. So that is also thing which people connect with us. And last year तक लोग हम लोग को जानते भी नहीं थे, and now we are hanging out with Divine. Vicky Kaushal is calling us, and the best part about every person who is supporting us,
मोस्टली मराठी पीपल. भाई मतलब काय तुम लोग को तो मतलब भाई मतलब हम लोग जिधर भी जाते एकच असतं, भाई तुम्हाला बघून आहे ना एवढं बरं वाटतं ना मराठी पोरं पुढे येत. मी बोललो हे बरं वाटतं ऐकून की बिकॉज दे नो सच पर्सन हु कॅन दे रिलेट टू, हु दे कॅन कनेक्ट, हु यु नो त्यांना असं वाटलं म्हणजे समोरून येतात ते भावासारखे येतात. सो दॅट द बेस्ट पार्ट अँड वी जसं मी सुरुवातीला बोललो वी नेव्हर टेक इट फॉर ग्रांटेड, नेव्हर. कारण प्रत्येक रील मध्ये एक साधेपण आहे, असं नाहीये की इट्स डन अप, म्हणजे असं स्टुडिओ मध्ये केलंय किंवा असं काहीतरी इफेक्ट्स टाकले असं नाही. खूप साधे आणि सिम्पल लाईफ असते. गोष्टी ज्या असतात ज्या रिलेटेबल असतात रस्त्यावर, वी हॅव नोटिस दोज थिंग्स आणि तुम्ही तेच एक्झॅक्ट कॅच करता. अँड दॅट्स वाय दिस इज रिअली ट्रेंडिंग. इन्सिक्युरिटीज बद्दल ते एकदम बरोबर बोललं. कारण काही लोकांना असं असतं की नाही, जसं तुम्ही बोलला की माझ्या बरोबरचे लोक पुढे चाललेत, मी काही नाही करत आहे. आणि नॉट एव्हरी पेरेंट इज सपोर्टिव्ह. असं होतं की ज्याचं कॉन्टेंट चांगलं आहे त्याला पण कधी कधी सपोर्ट नाही मिळत. म्हणजे देर इज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन की तू काय करतोय, काय कमवतोय वगैरे वगैरे. तर ते खूप, आय थिंक, गोइंग विथ द फ्लो अँड ट्रस्टिंग युअर ओन अबिलिटीज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट आय हॅव लर्न फ्रॉम यू राईट नाव. सो हु इज युअर फेवरेट कॉन्टेंट क्रिएटर? हा प्रश्न मला लास्ट टाइम एका विचारलेला एंड जेन्युइनली आई टोल्ड ब्रो ये तू बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया रे मेरे को. फेवरेट कॉन्टेंट क्रिएटर, सी आता जर फॉर्मॅलिटी म्हणायची आहे तर नील, सिद्धांत, सौरभ आणि शुभम आणि सगळे ते. बट टू जेन्युइनली आन्सर दॅट थिंग ना, इन इंडिया राईट नाव मला असं वाटतं कोणच नाही. मग genuinely, कारण last time genuinely someone asked me, my friend asked me this question and I was confused, bro. हाँ मैं कभी सोचा ही नहीं इस बारे में. And then I was like, okay, I'll think about it. And then I told him the same answer. I told him कि तो मेरे को नहीं लगता है कोई है जो तोड़ता है. In terms of hard work and content goal, you know, both things aligning together, quality content and both, असं मला genuinely नाही वाटत. मतलब पण नाही बोलू शकत मला स्वतःला, बिकॉज आय थिंक आय हॅव मेनी थिंग्स टू गिव्ह टू माय ऑडियन्स मोर. आणि मला पर्सनली नाही वाटू शकत की टिल द एंड ऑफ माय लाईफ I will be my favorite content creator. But there are many people randomly, but I won't select one. And one is very difficult. For outside also, there are many people who I love, like King Bash, Anwar, आहेत खूप लोक आहेत. To choose one is very difficult for me, यार. मतलब I watch football, so many people to say कि bro मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन है तू, ब्रो ऐसा ऐसा. बोलो मैं फैन है, बट आई लव फुटबॉल. आई एम नॉट कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोई गाली दिया ना तो मैं सब. आई लव, लाइक आई लव लिवरपूल, आई लव सिटी. सबका गेम जो अच्छा कर रहा है ना, जो मेहनत कर रहा है वो मुझे पसंद है. सो जस्ट चूजिंग वन फेवरेट कंटेंट क्रिएटर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी राइट नाउ. So you believe in equal. एक्झॅक्टली, लाईक मला नाही वाटत लोकांचं असं कोणी एक फेवरेट असू शकतो. बट लाईक इफ यू आस्क मी इन रॅप, आय विल गो फॉर डिवाइन, बिकॉज दॅट पर्सन हॅज, like I idolize him, I'm inspired by him. But apart from that favorite content creator or anything in favorite, I don't think so. माझी एक गोष्टी अशी फेवरेट, there are many things. Because तुला हा प्रश्न मी विचारला की which was your favorite conversation unfiltered, so I think you won't give just one. हा वाला सांग, हा वाला सांग. But apart from that, there many, म्हणजे मनोज बाजपेयी पण असेल किंवा अजून कोणी असू शकतं दुसरं तुझं. So just there can't just be one. बिकॉज प्रत्येकाचे, मला जेवढं आतापर्यंत एक्सपिरियन्स आलाय ना, प्रत्येकाची जर्नी वेगळी होती आणि प्रत्येकामध्ये एक युनिकनेस आहे आणि यू कॅन कम्पेअर दॅट विथ एनीवन. सो आय फील दॅट एव्हरीवन, एव्हरी परफॉर्मर, एव्हरी कॉन्टेंट क्रिएटर has an equal share in creating this hype in India. आणि डिवाइन तो, लाईक when that movie came in, I was big fan. Like आता पण जेव्हा we listen to the music, it's got so much of hardcore reality which hits like anything. म्हणजे जे लिरिक्स आहेत ना सॉंग्सचे, ते आर, आणि तुमच्या रील्स मध्ये पण ते खूप, यू यूज दॅट अ लॉट आणि वी रिअली लाईक दॅट.
So Yeah. that I really like about Divine. आता पण like whenever I have a commute time, म्हणजे मी जेव्हा ऑफिसला जात असते तेव्हा half of the time I'm listening to Divine songs because Right. that kind of gives that energy and And positivity while going for work. yeah, true. I That's completely agree to you with that. so that's the reason. Like I have met many celebrities, but when I met him, na, still today also when he messages me or when he calls me or whatever happens, I'm thinking like that new boyfriend. जो ते गर्लफ्रेंडनी पहिल्यांदा मेसेज केल्यावर काय उत्तर देऊ काय उत्तर देऊ? असं असं आय एम थिंकिंग. So I'm in that zone. I'm still in awe of him that he is talking to me. He watches my content. He likes my content. And I think that should be there between us because I idolize him on a different level. And yeah, man. मतलब, मी कधीच shock and awe नाही होत. But मी दोन माणसांनाच बघू get Divine. And the second one is Shah Rukh Story Khan. पण So, yeah. दोघांची स्टोरी इज like it's something which is very inspiring आणि खूप युनिक आहे आणि the way they have grown out of it and the way still they are humble. Yeah. त्यांच्यासारखे कोणी I don't think so any person is so humble and so grounded आणि Yeah. so rooted in India. म्हणजे I really respect both of them for that. Right. आणि आय थिंक आताचे कॉन्टेंट क्रिएटर्स आर ऑल्सो ऑन द सेम लाईन जेव्हा we see all of you are in the same grounded, your behavior is grounded, the way you're respecting all the audience which is there, which is like manje absolutely stunning. Yeah. Malata, I'm going to ask you we are extremely curious to know what's next on your platter. Next on my platter, मी मगाशी बोललो there was a special person whom I met recently and I Yes. cried. With that person, there is advertisement coming up in IPL, which is super huge for us. Like super huge. Like for that person, we cancelled our Goa plan and we had to do that. So that is coming up. Web series आता second episode आज आलाय ब्युनिकची. ते third episode is coming up mostly in the next week or something like that. And reels तो खत्म नहीं होने वाला है. Reels is like I talk to my friends also कि bro अपन कभी reels बनाना खत्म करेंगे क्या? Because किधर भी जाते तो कुछ तो दिखता ही है और उसके ऊपर कुछ तो बनाना ही. And internet is such a platform that it gives you ideas more. So you just cannot stop. Like trends. Yes. You feel like bro इस पे कुछ तो कर सकते हैं bro, इस पे कुछ तो कर सकते हैं. So ऐसा है. So there are a lot of things. My goal is like to just see myself on 70 mm in the theater. कि कैसा होता है भाई, अपना चेहरा कैसे दिखता है और वो देखना है. एंड टू वर्क वेरी मतलब प्रॉपरली अच्छा कंटेंट अच्छे लोगों के साथ काम कर so that you can learn from them because we have no formal training as such. So like whenever we go to some places to shoot and when we see people कि hey bro ये legend actor है तो we just watch कि भाई ये तो भाई think कर रहा है. Like I'll tell you, I shot something with TVF right now and there was a legendary actor who was there on the set and I was मी घाबरलो. मी बोललो ह्याच्या समोर मला उभं राहायचं. मी नाहीये तेवढा मोठा ऍक्टर आणि त्याला बघून आय वॉज लाईक की भाई ये तो अलग लेवल पे जा रहा है. एंड फ्रॉम देयर ऑल्सो आई लर्न समथिंग सो देयर इज I think I'm still in the awe that I'm acting. I'm working with such celebrities like Bunic or Divine or whoever I'm meeting right now. So हे 8 वर्षापूर्वी नव्हतं पॉसिबल फॉर मी and now it is there. So जे पण पुढे येईल, the next things which are coming in the future, it is just in awe because the person we shot with recently, मतलब half of the people know about it. They commented on my story. We were like कि अगर ये बंदे के साथ हम लोग मिलके काम कर सकते हैं तो अभी तो हॉलीवुड तो दूर नहीं लग रहा है मेरे को. अभी इतने लेवल पे हम लोग पहुंच गए. So we are just going with the flow and lot of things coming up. Web series है, movies भी आएंगे. Reels to hey, vlogs to hey. So people the real self, our real self in the vlogs, and reels पे just the humor thing. So वही अभी आगे करना है and आगे वैसे ही करते जाना. आणि आय थिंक आम्हाला नवीन we are looking forward for your movie.
नक्कीच मला वाटतं लवकरच येईल बिकॉज द वे यू आर ग्रोइंग एक्सपोनेन्शियली आय थिंक लवकरच मूवी येईल आणि लवकरच आम्ही विल सी यू ऑन अ बिग स्क्रीन Yeah. working tremendously on that. And I think when you say go with the flow, I don't think so it is go with the flow. I think it is because of your consistency and because of your hard work that you've come so far. Exactly. म्हणजे otherwise it wouldn't have been possible if you would have given up की ह्याच्यातून काही येतच नाहीये, you know, there's no revenue, तर हे आतापर्यंत it wouldn't have been possible. So I think I would like to credit it to you कि it is because of your consistency, and I think everyone watching this should realize that कि तुम्ही if you're liking that profession you should go further for it. म्हणजे never give up on that. I think so that's what I've learned from you today. या मैन मतलब वो तो है, गिव अप तो अगर शुरुआत में बहुत बार किया था, बट एज आई सेड कि कुछ और आता ही नहीं है, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में. So we were doing the same things and just wait for it. The flow which I said, as Devyani also said, कि flow ठीक है, but वो hard work भी है उसमें, और मतलब पैशन है काम करने का, तो फ्लो रखने का. We don't see कि ब्रो 3 महीने के बाद मेरे को शाहरुख खान के साथ काम करना, वो दिमाग में नहीं है. दिमाग में अभी क्या है, कल का रील क्या है, और व्लॉग डालने का है, तो अभी मेरे को नीचे गाली मिल रहा है कमेंट्स में, तो ये सब चीजें दिमाग में रहता है मेरा. जो आगे होना है ना वो हो जाएगा. जस्ट स्टे ऑनेस्ट टू योर वर्क एंड टू योरसेल्फ, व्हाटएवर यू आर डूइंग, एंड वो आगे जाके बिलीव इन मैजिक हो ही जाएगा. ये गारंटी मैं देता है, मेरे को पता, एक्सपीरियंस किया है. Absolutely. आता मी फन सेशन घेणार. इट्स गोइंग टू बी अ रैपिड फायर विथ यू. So choose one. नील और सिद्धांत और सौरभ और शमन. Choose one. अच्छा, एवढे सगळे और आहेत. हो. आता एवढे सगळे ग्रुप मधले होते म्हणलं की एकाला नको काढायला. विल पुट ऑल ऑफ देम. अच्छा, एवरीवन, Just choose one. एवरीवन तो फिर नील, बिकॉज एवरीवन नोज यार. कम ऑन, नील एंड 2015 से एक साथ है अपन, तो फिर तो सवाल. Okay, who is the most annoying in your group? मी एंड सिद्धांत. आय थिंक Any example? एक्झाम्पल काय सांगू तुला, म्हणजे मी 28 वयाचा आहे, बट आय ऍक्ट लाईक 18 और 19 और मे बी बिलो दॅट. सो एक्झाम्पल काय सांगू, लाईक वी डू रैंडम शिट. लाइक इफ वी थिंक लाइक रिगार्डिंग कंटेंट, इफ वी थिंक कि ब्रो ये करना है बिंदास जाके रोड के बीच में, व्हाटएवर, वी डू इट. वी जस्ट डू इट. और हम लोग पूरे ग्रुप को अभी ये हो गया है कि ये बेशरम है, अपन उनको सिर्फ कैमरा रह के खड़ा रहे, ये कुछ भी करेंगे. So all those things we do randomly, and we talk in the form of content only, you know? हाँ. तो उसके वजह से हमको ज्यादा कंटेंट आता है दिमाग में, and we talk bullshit in front of other people to make them awkward, and we can just But that's also a quality, huh? That's also a quality. that's also a quality, that is a skill. Okay, who needs most of the takes in your reels or videos? यही if people like my gang is watching right now, सबको पता है करण का ऐसा रहता है कि करण कभी खुशी नहीं रहता. करण ने अगर बोला कि 10 मिनट वीडियो शूट करके आ रहा है, तो वो 10 मिनट नहीं होता, वो 1 घंटा होता है. एंड 10 मिनट अगर हो गया तो वो इधर बोर्ड वगैरह लगा देंगे, हार वगैरह पहना देंगे मेरे को. आई एम नेवर सेटिस्फाइड विद माय टेक्स. लाइक इवन इफ आई डू मेनी थिंग्स, एंड आई से लाइक कि ब्रो एक सेफ्टी ले देगा, अरे परफेक्ट आई है, फिर से क्यों परफेक्ट हो. I mean that, and still sometimes what happens कि sometimes I shoot some things, and later I'm like कि bro ये reshoot करना पड़ेगा. I reshoot stuff. बहुत मेहनत किया रहेगा ना, I go and reshoot stuff because ये लोग सब मेरे को गाली देते हैं, बट ये लोग को भी पता है कि अगर करण रीशूट कर रहा है ना, मतलब इसको पसंद नहीं है, और ये जो रीशूट करेगा ना, ये अभी तूफान रहने वाला. So as I said, I don't ever take my audience for granted and my content for granted as well, because once I put my content out, I cannot delete it. I won't be like, अरे ये बाद में delete कर दूंगा. नहीं, मैंने डाला है तो ये विश्वास के साथ ही जाएगा मेरे. So like you believe in perfection in whatever you do. Perfect. मेरे को perfect चाहिए ही चाहिए, नहीं मतलब नहीं. Your favorite video of you so far? My favorite video of you so far, of yourself. Very difficult to judge over here also. Favorite, पर तू प्रश्न है favorite शब्द. अब
my favorite video, if you say, which I think which was a very random. So I'll tell you my favorite video and my favorite thought. Okay, there is a video of me, best days of my life. Okay, I shot it with my friends in Konkan, where I'm playing with my friends in my childhood, and then switches to the current form, which is bag वगैरह, job ला है वगैरह, all those things. वो मेरे दिमाग में 2 साल से कॉन्सेप्ट. एंड देन वो हम लोग गोवा गए, मेरे को अच्छा लोकेशन लगा, आई शॉट इट. आई वाज गोइंग टू पुट इट आई गेस जुलैच्या लास्ट, बट आय कुडंट बिकॉज माझ्या घरी काम चालू होतं अँड आय कुडंट पोस्ट इट. आय वॉज लाईक यार संडेला टाकायचं होतं, संडेला नाही टाकला. बट देन द नेक्स्ट वीक वॉज फ्रेंडशिप डे एंड आई वाज लाइक ब्रो ये फ्रेंडशिप डे का कंटेंट है, मैं मिस कैसे किया. And then I was like so proud of myself that I could think of that content. I shot it how I wanted to shoot it, put out the right music, put out the right edit, and put out the right time to post it so that people could connect to it. So I think that is my favorite content so far. There are many, but if you ask me currently, the thought process behind that, na, personally for me, I love the thought process of every content creator. जेव्हा पण म्हणजे कोणी सिद्धांत असेल, नील असेल, कोणी जर व्हिडिओ टाकत असेल ना, मी त्यांना विचारतो ब्रो कैसे आया दिमाग में, मेरे को ये जानना है. आई लव दैट प्रोसेस. सो एवरी लाइक आई वॉच मेनी मूवीज ऑल्सो. आई लव टू नो कि वो डायरेक्टर के दिमाग में क्या था, ये कैसे आया उसके दिमाग में. सो दैट्स व्हाट आई लव टू थिंक एंड that is the process, and every video is favorite of mine, but that one is like I love it. So my next question is, who is your favorite director and movie so far? Okay. Favorite. Okay. In India, if you ask me, I would go for Anurag Kashyap. Gangs of Wasseypur वगैरह सगळे एका बाजूला मी टाकतो. I can watch Satya million times. I can just मतलब अनुराग कश्यप से मिलकर मुझे इतना ही बोलना है, सर मुझे ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, मुझे फोटोग्राफ नहीं चाहिए, मुझे यही जानना है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या था while doing Satya. That is my favorite all-time film. And in Hollywood, again, many directors are famous, but every person knows who's close to me. They know that I love Christopher Nolan. I am a huge fan of Christopher Nolan. And my favorite film of him, if you ask me, is Prestige, which was an old movie, I think 2000. Many है, Interstellar, Inception, Tenet वगैरह खूब है. But Prestige was the one which gave me, like, in that era he thought of those things. And I still watch his movies. Also to add in this, sorry, मी जरा जास्त करतोय answer माझा. नाही, उलटा बोला. So many people know, and like my gang also knows that कि in my reels there is some part of all these directors which I put in framing असेल किंवा in conceptualization असेल, आणि तिथून पण मी शिकतो. Like many people know, I have a highlight in my profile which is #movieOP. I used to watch movies in the night every day in the lockdown. आणि मी बोलायचो भाई ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं है अभी. So how can I work on those lines? So I put all these things in my reels, framing असेल, conceptualization असेल, music असेल. I put every bit of detail in all these things, आणि त्याच्यानंतर माझा तो content out होतो. People won't understand that, but I know when ते बोलतो ना की you be honest to your skill, to your quality of content. मग लोकांना एन्जॉय करू दे. बट मला माहिती मी माझा कॉन्टेंट काय विचार करून टाकला, मी काय फ्रेम लावलेली, मी हा विचार केलेला, मी तो विचार केलेला, ते मला आवडतं. सो आय जस्ट पुट एव्हरीथिंग इन माय कॉन्टेंट 1000%, अँड देन इट गोज आउट टू द पीपल टू लाईक, कॉमेंट, शेअर. कारण एक स्क्रिप्ट एक पार्ट असतं, बट ते व्हिज्युअलायझेशन आणि द वे द शॉट हॅज टू बी रेकॉर्डेड ते एक वेगळं असतं. बिकॉज व्हॉट यू थिंक कधी असं होऊ पण शकतं की इट डज नॉट काइंड ऑफ एंड अप लुकिंग द सेम वे. सो आय कम्प्लिटली अग्री विथ युअर पॉइंट की ज्या वेळेस यू हॅव टू व्हिज्युअलाइज इट, हे खूप उपयोगी पडतं, व्हॉट एव्हर यू हॅव सेड. खूप. ओके, सो रील्स, यूट्यूब व्हिडिओज और थिएटर एज इन नाटक का? एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ
big screen or whatever. So what is your I what do you think prefer? first priority I will always give to reels, because that has given me many things. And if you ask me what would I choose between Hmm. reels, this, then I will choose theater 70 always, because that is a completely different, Different. मतलब experience and a life to live. कि भाई ये क्या level पे अपन कर रहे हैं, मजा आ रहा है. So that So is the पहिली thing. मूवी जी येईल हाँ. पुढे कोणासोबत? Whom do you dream of working with any actor or director? पहिली movie of yours. पहिली मूवी तर भेटणं कठीण आहे, बट ऍज आय से बिलीव्ह इन मॅजिक, इफ दॅट हॅपन्स दॅट इज, म्हणजे त्याच्यानंतर तर लोक टी शर्ट छापून मला पाठवतील. सो आय वुड वॉन्ट द फर्स्ट मूवी टू बी विथ, लाईक मूवी का असो, ऍड असो, वॉट एव्हर इट इज, आय वॉन्ट इट टू बी विथ शाहरुख खान. And I admire him a lot, a lot. So I want that, but I am in that phase कि जैसा मैंने बोला कि go with the flow, कोई भी मिले मेरे को फर्क नहीं पड़ता. हम्म. माय एम इज जो मैं फ्रेम में है ना, वो फ्रेम मध्ये मला तोडायचं आहे. हम्म. ते पब्लिक बोलली पाहिजे भाई हा फ्रेम मध्ये, दॅट्स वॉट, मतलब जेव्हा रील बघते तू, तेव्हा तू तुझ्या डोक्यात ते राहतं, अरे करणने ते केलेलं, करणने वॉट एव्हर इट इज Exactly. ही थॉट ऑफ. आई वॉन्ट माय ऑन स्क्रीन प्रेजेंस ऑल्सो लाइक दैट कि ब्रो वो कौन था रे, वो क्या वो कैरेक्टर आया था, क्या ना वो दिमाग में बैठ गया. आय वॉन्ट दॅट टू हॅपन. मग ते शाहरुख खान असेल, मग ते नवाज असेल, मग पंकज त्रिपाठी असेल, कोणी असेल, बट आय वॉन्ट माय स्क्रीन, माय ऑन स्क्रीन प्रेझेन्स टू बी नोटिस्ड बाय दी ऑडियन्स, अँड मी तोडणार, मग त्याच्यात फोडणार. आणि आय थिंक ते होईलच लवकर. आय थिंक ते लवकरच होईल. आय थिंक यू विल वर्क विथ ऑल ऑफ दीज पीपल यू हॅव मेन्शन्ड फॉर शुअर. Okay, क्या so last question. What has surprised you about yourself? surprised me about myself that I can be so focused about my work. Because I मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग है कि मैं इतना इनडिसिप्लिन आदमी अभी भी हूँ. लेट उठता हूँ. म्हणजे आता पण सकाळी आई बोलवते, पाहुणे येते, हाफ चड्डीवर फिरतोय घरी, काय चालू आहे तुझं. सो दॅट वॉज द थिंग्स हॅपनिंग. बट वेन इट कम्स टू माय वर्क ना, दे ऑल्सो नो, माय पेरेंट्स ऑल्सो नो की भाई हा सगळं विसरतो, हा Oh. सगळं हा आमच्याशी मतलब बात करना भी भूल जाता है मॉम डॅड से. माझी पुतणी आहे, माझ्या पुतणीला मी 1.5 वर्ष भेटलो नाही बिकॉज ऑफ माय वर्क. मतलब लिटरली आय कॅन लिव्ह एनीथिंग फॉर माय वर्क. आणि दॅट सरप्राइजेस मी की ओ माय गॉड, आय कॅन बी सो फोकस अबाउट माय वर्क, विच वॉज, मतलब ठीक आहे मी आधी होतो, बट इतकं फोकस्ड नाही. मला दॅट्स रिअली सरप्राइजेस. फोकस्ड इंडियन कधी नाव पडलं लाईक ऑफ फोकस्ड युअर इंडियन, ऑफ युअर अकाउंट? सो फोकस इंडियनचं असं काही मोठी स्टोरी नाही. आय वॉज वर्किंग विथ ऑल इंडिया बक्चोर ऍज अ इंटर्न, मग असंच 1-2 हफ्ते. आणि त्यावेळी ते त्यांचे व्हिडिओज यायचे ना, तर ते ऑल इंडिया ऑल इंडिया ऑल इंडिया माझ्या डोक्यात बसलेलं. आणि आय वॉज लाईक की ब्रो ऐसा ही कुछ तो अपना भी नाम होना चाहिए. तो काय काय करायचं काय करायचं काय करायचं. देन आय वॉज लाईक की ओ देर आर, त्यावेळेस न्यूज मध्ये खूप साऱ्या गोष्टी चालू होत्या. एंड आई वाज लाइक कि ब्रो मुझे लगता है इंडिया में लोग बहुत है, बट फोकस्ड कोई नहीं है. तो लेट्स बी फोकस्ड. I am also not focused, but I am focused about my work and my content. And I think people will join this army and they can be focused as well, and they can get inspired by me, and I would love that. And I think that's what matters, and that's what makes your parents proud of you. So I think that is a fabulous message you have given. So this is a wrap, and it was a wonderful session. खूप काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या because content creation पैकी I think you're the first one what we have interviewed by far, Okay. and it was very inspiring. आणि one message you would like to give to everyone before we wrap up the session? मास्क घाला बाहेर पडताना. ते सध्या खूप गरज आहे त्याची. अँड नो सच मेसेज, मतलब मी ते नेहमीच बोलत असतो लोकांना. लोकांना पण माहिती आहे की just be honest to your work, man. Whatever you're doing, not only videos, but to your work, whatever you're doing. तुम्ही कामाला जात असाल, काय ऑफिसमध्ये काम करत असाल, मला माहिती आहे की खूप लोक खूप आपल्या लाईफमधून स्ट्रेस्ड आउट आहेत.
मला खूप लोग मैसेज करतात की ब्रो वीडियोस देख के बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रेस आउट हो जाता है, मैं अभी काम के स्ट्रेस में था, मैं अभी वो स्ट्रेस में था. हमको भी स्ट्रेस है वो जो हम दिख, इसलिए सी this is the reason I yesterday put out the story that I'm coming live after 5,000 years. That was a Yes, sarcasm. yes. People know it की I don't come live because माझी लाईफ तेवढी सिम्पल नाहीये. मी खूप गोष्टींमध्ये अडकलोय. There is tension, there is work, there is everything involved आणि त्याच्यानंतर आमचा आउटपुट तुमच्या समोर येतो. So I'm just saying that you be just honest to your work and it will give you returns. I know it will give you returns because it has given me थोडा late, but But मला it वाटतं has. yeah, it has, and it is because I have been consistent from 11 years when I started theaters. And मला माहित नव्हतं मला आता अशा गोष्टी भेटणार आहेत आणि भेटल्या. बिकॉज द बेस्ट पार्ट इज वाय आय से बिलीव्ह इन मॅजिक, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट इट. वेन इट हॅपन्स Correct. अनएक्सपेक्टेडली, मग ते असं वाटतं अरे हे पण झालं माझ्याबरोबर. दॅट इज द Oh, बेस्ट. तो यू जस्ट बी इन द प्रोसेस ऑफ योर हसल. फिर जो सामने से आएगा ना, वो तुम वो एक्सपेक्ट मत करो, वो आने दो, वो ऑटोमेटिकली आने दो, फिर अच्छा लगता है. इफ यू एक्सपेक्ट थिंग्स ना, देन इट गेट्स हर्टफुल. इन correct. रिलेशन ते होतं आणि ते सगळीकडेच होतं. सो जस्ट डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स, ऑटोमॅटिकली होने दो, फिर मजा देखो उसका. I think that's a very wonderful thought which you've put forward, and thank you so much for your time. खूप बिझी होता, but like आज वेळ काढला त्याबद्दल we are really grateful, and it was a wonderful session. Thank you all the audience for tuning in today, and I'll be rolling out the other episodes soon, so we have someone interesting coming in. Thank you so much. Thank you so much, Karan, for joining in today. Thank you Thank you. so much, Thank you all Dev, of you. for being peaceful and having patience for me. And thank you so much. Thank you. I'll just love this. Patience kind of, but like I genuinely love the way all of you, मी आधी पण खूप वेळा mention केलं, I genuinely like the way all of you create content, and it is really an honor to host this today with you, and this was unexpected for me. The unfiltered conversations were unexpected for me. कधी expect नव्हतं केलं की this will get me so much of prominent personalities who have so many diverse experiences. Kadi expect me asats, I started off with a thought process the way you Yeah. said, but it turned out to be positive. So I am grateful to all you Yeah. speakers who have made it possible. Yeah. You So were not thank expecting, you. so that is the best part. Unexpected things happen to you, so you were like, "अरे ये हो रहा है तो ये होने दो." That's fun. That's fun. No, कारण मी पहिला एपिसोड केला त्यानंतर इट वॉज लाईक इट जस्ट स्टार्टेड रोलिंग इन. म्हणजे असं काही मी आय हॅड नॉट प्लॅन्ड फॉर की इट विल गेट दिस ग्रॅव्हिटी, बट Hmm. थँक यू टू ऑल ऑफ यू हू हॅव मेड इट पॉसिबल. सो आय एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस. थँक यू सो Thank, मच. thank you so much. Yeah. Thank you so much. Thank you so थँक much यू. थँक right now. And लवकरच vlog येतोय. बॉम्ब बॉम्ब करू नका. ओके. थँक यू. थँक यू.